So I'm in conversation with the very talented Shreyas Puranik, whose song from Animal has become very, very well known. But he has a larger repertoire of songs that we'll talk about today. You grew up in there is Chhattisgarh in your growing up as well as Maharashtra. So tell me about that. Your growing up years, So, and your influences. firstly, thank you, Manjuji, for having me on your platform. And I was born and brought up in Nagpur, and my dad was in into coalfields, and he was transferred to Chhattisgarh, and not Okay. just Chhattisgarh, the interiors of Chhattisgarh. So Okay. from completely शहर वाली जिंदगी से हम सीधा चले गए. इट वाज अ कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज इन आवर लाइफ्स बिकॉज सीधा वो गांव ही था. मतलब वहां पे लाइक Mm. इट वाज नॉट डेवलप्ड. इट वाज सडनली अ मेजर शिफ्ट इन आवर Mm. लाइव्स. And then I had stopped like learning music. I was learning music until I was in Nagpur. But once I किस साल shifted के there, थे thoda, आपने? You started very early, na? I started singing at the age of 3, Oh, and that then is very. I used to learn singing and I used to leave classical music because I used to get bored. बट मैंने कभी ऐसा मतलब सीखा सीखा नहीं. मैं इतने टीचर्स बदले, कभी टीचर की शक्ल अच्छी नहीं लगी, कभी टीचर ही अच्छा लगा, कभी ऐसे अच्छा. बहाने दे दे Okay. करता रहा. एंड देन एक बार छत्तीसगढ़ गया तो देर वॉज अ स्मॉल ब्रेक फॉर अराउंड 2-3 years. बट देन आई मेट अ टीचर कॉल्ड विश्वजीत चक्रवर्ती. एंड सडनली देर वॉज अ लाइक क्या कह सकते हैं, बिजली गिरी हमारे म्यूजिक ये मतलब छत्तीसगढ़ मेरे की म्यूजिक. बात है. Yes, yes, because he Okay. was such a good teacher, and he taught me different kinds of ghazals and classical को उन्होंने इतना आसान बनाया. And that's how I again Got started singing, interested. Yeah. got back to music. And Mm. then वहाँ करते करते someone I used to perform at my dad's cultural उनके Mm. Mm. coalfields, WCL Western Coalfields Limited के Mm-hmm. when I used to perform, and I met some musician named Kunal Dasgupta, and Mm-hmm. he was like, आप अपने बेटे को बॉम्बे भेजो सुरेश Mm. वाडकर जी के एकेडमी में. Okay. एंड आई वाज स्मॉल, मैं देखता था इंडियन आइडल में उनके एकेडमी से काफी सारे स्टूडेंट्स आते थे. आई वाज लाइक यार मुझे जाना है मम्मी. एंड आई वाज जस्ट लाइक क्लियरिंग माय 10th, एंड माय मॉम डैड वर ग्रेशियस इनफ टू सेंड मी टू बॉम्बे. Okay. And that's how I came to Mumbai and started learning. I wanted to become a singer and not a composer. I didn't know Mm. what composing is. But Right. then गला चल नहीं रहा था, so I started to compose. Uh-huh. Then that's how the journey began of composing. My God. So interestingly, because I recently interviewed Benam artists from Chhattisgarh, the group of boys who I met at in Solan in they had come to perform in Shulini University where I had gone, and I saw these lovely artists, about 10, 12 boys, and the kind of music. There's a music school there, which was they were all from the school, and my God, the kind of music. And I think there is something about the hills, something about areas which are cut off, which are very pure. वो Yeah, so then इन्फ्लुएंसेस अलग होती हैं. वो ज्यादा लोगों के, अभी तो शायद सोशल मीडिया आ गया तो एवरीथिंग इज बिकम वन. देयर इज नो Yeah. सच. Yes. नेचुरली जो एक प्योरिटी होती है वो जब तक हैम्पर नहीं होती बाहरी दुनिया से, तो वो Mm. प्योरिटी मजा ही कुछ और होता है. And so I can easily say that so the coal went to become a diamond in Bollywood. Mhm. I think that was the best one. That was the best one. Right. Yes. So tell me Yes. about your Bollywood. I mean, I can't say Bollywood. I can't say Bollywood. Your training with Suresh Wadkar ji. How did that come about, and what did you learn, and everything from there? So, so when I shifted to Bombay, I was just 16, and जो गला चेंज होता है प्यूबर्टी में, Uh-huh. लड़के का गला फूटता है जिसको कहते हैं, जी. एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम कि आप क्या करते हो उस वक्त पे. बिकॉज फ्रॉम फ्रॉम हैविंग अ वेरी फीमेल वॉइस, मेरी धीरे धीरे Mhm. करते करते वो मोटी वॉइस की Yeah, तरफ exactly. आ रहा था. एंड दैट्स द सेम टाइम वेयर आई जॉइंड द एकेडमी, सुरेश वाडकर Okay. जी, आजीवासन. जी. And I used to not enjoy singing at that point because when voice changes and you need comfort, you need someone to be there like a parent हो आपके Mm. साथ हो. And I was lonely because ये समझ में नहीं आता था because सब लोग ऊंचा ऊंचा गाते थे और मैं गा ही नहीं पाता था. Mm. And it's a very difficult phase for any singer when like you're not able to like project the feelings only what you're trying to Mm. emote, वो आप Mm. कर ही नहीं पा रहे हो. Mm. So that was a little hard time, but वो अच्छे से चला गया. Mm. And in 2008 I shifted to Mumbai, and in 2011
I started to compose because I had gone through a very small, like very cute heartbreak because I was not into a relationship. I Okay. used to like a girl, and after a few months, when I tried to go and when I tried to go and propose to her, or at least like propose करना ही आता नहीं था because Mm-hmm. मैंने date नहीं किया था कभी. So that the same day she told me कि I've started dating this boy from this city. Okay. So मैंने बोला भाई बहुत अच्छी बात है. And that thing just struck me really hard, and that's how I started to compose. And there was no money to hire any lyricist. So whatever I was feeling at that point of time, You I wrote. started to songs. I wrote my songs, and then eventually they were sold to some music company also, Mm-hmm. and I started to earn money, Mm-hmm. and that's how I somehow met Mr. Bhansali, because the then CEO of Mr. Bhansali, Sandeep Singh, Mm-hmm. he saw me with my Guru Bhai Rahul Vaidya. He's Mm-hmm. also student of Yeah. Suresh Wadkar ji, Mm. and like, why don't you assist Mr. Bhansali on Bajirao Mastani, because Bajirao is a Maharashtrian based Mm. film, and it would be Yes, and you good to are. have a Mm. Maharashtrian boy Mm. as an assistant. And I was a little confused कि मैं यहाँ अपना मार्ग बनाने आया हूँ, तो should I assist someone, और assist करने का शौक तो पहले से था, बट अचानक किसी ने पूछा है तो हम अपना ही एटीट्यूड ले आते हैं कि नहीं करे कि नहीं करे. बट How वो old were you around that I time? was I was 21, Okay. 21. So very, very, Yeah, yeah. Mm. एंड वो अच्छा फेस था कि आप असिस्ट करना शुरू कर सकते हो. एंड Mm. एंड एट द राइट टाइम आई वाज एट द राइट प्लेस, Mm. एंड आई स्टार्टेड कंपोज आफ्टर इयर्स ऑफ असिस्टिंग मिस्टर बंसाली. ही वाज लाइक, यार मुझे ना एक आरती चाहिए इसके Mm. लिए, Mm. बाजीराव मस्तानी के लिए, Mm. तो कैन यू डू समथिंग. तो मैंने बोला, सर आई विल बी लाइक इट विल बी ऑनर टू कंपोज समथिंग. तो दैट्स हाउ गजानना फ्रॉम बाजीराव मस्तानी आई Oh, कंपोज्ड. okay. How यस. lovely. Also, एंड the fact that, see how it turns. Mr. Bansali is so musical. You also worked with somebody who's so immersed in music. He यस. has such a great sensibility that he composes as well. So, look at your destiny that it leads you to music this way, यस. indirectly. Yeah. Because see, बाकी I was literally I was behind शंकर महादेवन जी की, सर मुझे असिस्टेंट रख लो. सो वो नेचुरली सबके अपने अपने टाइम होते हैं, सब Mm, इतने बिजी, नो वन mm. कैन लाइक असिस्ट करना बड़ा Yeah. अजीब सा टास्क. देन आई Yeah. ट्राइड टू साजिद वाजिद ऑल्सो, बिकॉज जो जो मुझे मिल रहा था मैं असिस्ट करने Mm, के लिए mm, पूछता था. mm, बट ये मौका सामने से ही आया, एंड देन आई थिंक वो हमारा लाइफस्टाइल भी सेम है. इन इन टर्म लाइफस्टाइल, मेरा कहने का मतलब, हम गाने सुनने का तरीका उनसे मैंने mm, इतना सीखा. mm, बाकी mm. लोगों के साथ शायद मैं इधर उधर कहीं और खो जाता, बट दिस दिस वाज लीडिंग टू समथिंग लाइक, यहाँ से आप म्यूजिक करो और 70 पे आपको क्या दिखने वाला है, यू नो, So tell me लाइक your व्हाट. first meeting with him. How did you, were you scared? What was it like? It was like, so I started assisting Mr. Bansali in July 2014, Hmm. and Singh had made me meet Mr. Bansali in Jan 2014. Hmm. So मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ मिलने, and by that time I didn't know he wants me to assist Assist him. Mr. Bansali. Hmm. आके मिलवा के ले गया, सामने बिठा दिया. सो अब नेचुरली इतना बड़ा इंसान जब सामने आता है तो आप डर जाते हो. एंड तो मैं गया और मैंने कुछ गाने सुनाए, तो बोले आप रियाज करते हो. एंड बाय दैट टाइम आई वाज नॉट रियाजिंग, आई वाज कंपोजिंग, सो रियाज थोड़ा कम हो गया था. तो मैंने बोला हाँ सर मैं करता हूँ. बोले बेसुरा गा रहे हो आप. तो मैंने बोला अरे पहली बार में सर. एंड देन देयर वाज अ ब्रेक ऑफ 6 months. अंटिल देन संदीप वाज स्टिल ट्राइंग टू पुश कि आप रखो इसको, Hmm. असिस्टेंट रखो. एंड देन अगेन इन जुलाई, 1 जुलाई, मैंने उनको मिला. बोले श्रेयस आज मूड नहीं है, कल आओ. अगले दिन गया, बोले कल पक्का, कल पक्का करते करते से 2-3 दिन का गैप हुआ. एंड देन ही जस्ट हर्ड अ फ्यू सॉन्ग्स ऑफ माइन, एंड इज लाइक कि ठीक है कल से आ जाओ आप. Hmm. एंड मैंने पूछा ये हाँ या ना कब पता चलेगा. फाइनली बोले बुला लिया मतलब हाँ ही है. एंड देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड ऑफ assisting him, like helping him out in recording singers, because he cannot sing. He just tells us, तो हम वो Hmm. उस तरीके से singers को बता देते. So तब तक समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट मजा आ रहा था. Hmm. देन फिर बाजीराव मस्तानी हुआ, फिर पद्मावत हुआ, Hmm. रिसेंटली काठियावाड़ी, एंड नाउ आई एम working as a music associate and arranger for Netflix Hira Mandi. Hmm. Which is So, his, yeah.
Fabulous. And so he's your guru too, in a way. He also Yes, shaped yes, your flow. definitely, Yeah. What did you learn definitely. from him? What is that people talk about his perfection and his meticulousness. Tell me, what did you learn from him? So I think firstly there are a lot of things I've like tried to learn from him. मैं Hmm. ऐसा नहीं कहूँगा मैं पूरा सीख गया उनसे because the love for Lata ji he has Hmm. and the same love my guru Suresh Wadkar also has. So Hmm. there is a common factor there also because Yeah. I've heard different songs from because Lata ji if you listen to Lata ji वो पूरी encyclopedia है. Hmm. आपको हर चीज उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा. रफी साहब को सुनते हैं वो तो Hmm. firstly the kind of music he listens to कि हमको बताते हैं कि तुमने ये सुना है तो हम Hmm. कहते हैं सर कैसे हो तुम सुरेश वाडकर के स्टूडेंट हो तुमने ये नहीं सुना है तो Hmm. सडनली ही पुट्स यू डाउन सो दैट यू गो एंड लिसन टू Yeah. Your homework is done. Yeah. सो फर्स्टली वो है एंड देन मंजू जी यू वोंट बिलीव हमारे एक एक गाने के कम से कम नहीं तो 300-400 ड्राफ्ट्स बनते हैं Wow. पहले तो क्या साउंड होने वाला है उसके ड्राफ्ट्स बनते हैं फिर मिक्सिंग में आके ये इस इसका घुंघरू यहाँ पे इतना बढ़ना चाहिए यहाँ स्वर मंडल और आना चाहिए एंड ही जस्ट वर्किंग हार्ड सो आप अपने जब मेंटर को फॉलो करते हो तो नेचुरली आप उसका 1% तो आप लेने की कोशिश करते हो तो दैट्स Right. हाउ आई ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई दैट सेम थिंग एंड Same हिज thing. इयर्स आर समथिंग एल्स उनके उनकी सुनने की जो क्षमता है जी. मतलब जो गहरी क्षमता है आई Hmm. डोंट थिंक इतना इतना डेडिकेशन के साथ कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी म्यूजिक करता है Hmm. तो आई Amazing. थिंक it's immense hard work immense passion and immense love for his art and to not let go and because he has the bandwidth also to pull it off Hmm. to make the music look like a dream on screen also so Hmm. there are a lot of factors so he's not just a music director but I think it's a complete package when you talk about Mr. Bhansali so too much Also, to learn. Also, a lot of Indian musical instruments are at play. There are folk. There is so many Indian forms which come together, and that also, is a very specific, very marked quality about his work. What Yes. did you learn in that whole thing? I mean, I'm sure your knowledge would have increased with him, but this sensibility आपके अंदर भी आई है because you would also your songs are also very melody oriented. यस डेफिनेटली जैसे इंडियननेस की जो आप बात कह रहे हैं जी. ये तभी आ रहा है जब आदमी जमीन से जुड़ के Hmm. मतलब Hmm. Hmm. दुनिया देखी होती है जी. अब लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लिसन टू घूमर Hmm. he could have just started धनक प्रीत की सर पे ओढ़ Hmm. कर घूमर घूमर घूमे but it's when it's Bhansali sir it cannot just be a song Yeah. it has to be a it's a cinematic grand thing so he got Rajasthani folk आओ जी आओ घूमर डी रमवाने Hmm. पधारो सा घूमर जी रमवाने डा 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 Hmm. डा 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 so that just adds to the grandness and वो स्टडी है उनकी वो Hmm. सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो ही इज आप आई वांट टू शेयर अ Hmm. स्मॉल थिंग अबाउट घूमर आल्सो सो वी हैड मेड घूमर वाह वाह बहुत अच्छा बना इट वाज अ सिंपल ट्यून लाइक हाउ आई स्टार्टेड लाइक नेचुरली कैसे स्टार्ट होता Hmm. सो Hmm. आलाप आ गया एंड घूमर गाना यू मस्ट Hmm. हैव हर्ड इट Yeah. आ गया गाना record हो गया सब हो गया गाना सब ताली बजा रहे बहुत अच्छा ही टुक द सॉन्ग टू द कोरियोग्राफर आई थिंक ज्योति मैम हैज डन द कोरियोग्राफी Hmm. उन्होंने बोला इतना फास्ट है मैं तो घूमर इसमें हीरोइन को नचा ही नहीं पाऊंगी इट वेंट टू अनदर साउंड प्रोड्यूसर फिर बोले नहीं ये भी काम नहीं करेगा थर्ड टाइम फाइनली दे हैड टू अरेंज द सॉन्ग एंड डिजाइन द सॉन्ग दैट्स व्हेन द सॉन्ग वाज फाइनली अप्रूव फ्रॉम द Oh, okay. Hmm. घूमर स्लो रिदम में होता है हाँ, हाँ, आओ हाँ. जी आओ घूमर डी हाँ. रम हमने थोड़ा फास्ट रखा था आओ Hmm. जी आओ घूमर डी हाँ. रमवाने तो द कोरियोग्राफी वाज शिफ्टिंग Had to match. Yeah. How lovely. Such intricate details, right? Okay. Now tell me about Animal, this song, which is now, I think everybody's singing the song. सतरंगा सो It's your own सतरंगा composition 1 year ago, right? If I'm not wrong. You had already worked on it? Yes, so last year, me and my writer Siddhartha and Garima, we had made this song and only the first verse of the song, Sat Badrang mein Satranga hai ishq re, and it was not going anywhere and वो एक हफ्ता हो गया था and हम लोग just wait कर रहे थे कि यार कहीं अच्छे जगह लगे and we Hmm. work as a team. Hmm. There was a मतलब क्या दिल्ली ख्वाहिश थी कि बड़े
पर्दे पे ही गाना देखे एंड ऑल. Hmm. एंड देन कुछ हुआ नहीं उस गाने का, तो एक एक हफ्ते बाद शायद दिवाली पार्टी थी हमारे राइटर्स के घर पे, एंड दे आर क्लोज फ्रेंड्स विद मिस्टर वांगा. Hmm. दिवाली पार्टी में हम लोग दिवाली में हॉल में बैठे थे, एंड माय देयर वर लॉट ऑफ पीपल एंड माय Hmm. वाइफ वाज सिटिंग. Hmm. शी वाज लाइक, who is this? Because Mr. Wanga looks also like he's animal himself, like in terms of build and Hmm. beard. Hmm. तो मैंने बोला he has directed Kabir Singh, Hmm. and he's making this film called Animal. Hmm. So I was like, why don't you go and meet him? Well, Hmm. I think someone else is doing the music. I've Hmm. read it, the poster Hmm. of like Hmm. was released. बोले अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं. And then we were at Diwali party, we were chilling, we were playing cards and all. And me and my writer, we just went out in the balcony, and we were chilling. And मैंने वो चांद को देख के गाना गाया. Hmm. आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा. मैं गाना गाते गया. And then suddenly Mr. Wanga walks into the balcony. What is this? सो सिद्धार्थ टोल्ड मिस्टर वांगा कि ऐसा ऐसा गाना है एंड हमने बनाया अभी गाना. तो बोले कैन यू सिंग इट अगेन. तो मैंने वापस गाया, एंड ही बीइंग फ्रॉम हैदराबाद वी हैड टू जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट कि Words क्या to है, him. Hmm. वर्ड्स क्या Hmm. है, बांधे जो पीपल पे Hmm. धागे. Hmm. देन हम लोग अंदर चले गए. आई थॉट चलो यार किसी ने तारीफ करी, मतलब गाना अच्छा बना है. वी वर इनसाइड द पार्टी, एंड देन ही केम अगेन केम टू मी एंड ही इज लाइक कैन यू सिंग इट वंस मोर. मैंने बोला यार ये तो क्या हो रहा है. मैं और एक बार गाया. देन ही इज लाइक कैन यू सिंग इट अगेन. तो आई हैड माई गिटार इन द कार, आई वेंट डाउन, गॉट माई गिटार. मैंने गिटार पे सुना है. बोले आप गिटार पे गा दिया, और एक बार विदाउट गिटार लास्ट गा दो बस. Hmm. सो ही हर्ड द सॉन्ग अराउंड 4 to 5 times. एंड देन आई थॉट कि अभी कुछ होगा, शायद होगा. बट आफ्टर वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम. सिद्धार्थ गरिमा एंड मी वेंट टू मीट हिम. इज लाइक कैन आई यूज दिस सॉन्ग. मतलब भाई एक हफ्ते से इसी कॉल का तो वेट कर रहे थे कि आप यूज करो. सो देन अदर वर्सेस वर रिटन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू द नरेशन. Hmm. And that's how Satranga happened at a Diwali party. So here also I was at the right place At at the right right time. time. Can you sing the song again for a few lines? Hmm. आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा. ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां. ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के. बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे. ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे. थैंक यू. So beautiful. Really, really nice. So much soul in it. And when you composed it, when you saw it on screen, how did you feel? I think it was just I had prayed to I believe in Lord Siddhivinayak a lot, and I always, whenever I'm tensed or worried about anything, or even on regular basis, I pray to Siddhivinayak, and I was like भगवान मैं चल के आऊँगा भगवान, ये गाना please आप ले आना. And when once the song was logged, agreement was done, still you have to wait until it is finally Yeah. out, because in this Mm. case anything can Yeah. happen. But when I saw this song on screen, and with Ranbir sir with that look, I think it was just मतलब मतलब मैं 15 साल से बॉम्बे हूँ. I did बाजीराव मस्तानी also, but this was something romantic which I composed and which was finally on screen. And And what did your Rashmika, gurus tell you about it? That is important, my right? my guru, I cannot tell you. My music school, we had a function on the 28th, and the song Mm. was released on 27th. So there was a huge function going on with Sonu Which Nigam, school is Sukhwinder Singh, this? In uh, this is Nagpur. Suresh Wadkar. No, हाँ Suresh ये Wadkar अच्छा ji's अच्छा ये school bomb हाँ. Ajivasan, it's in Juhu. And in middle of that function, it was a 8 hours ka workshop, and in the end, Mr. Sukhwinder Singh was performing Hmm. in the end. But my school literally played the entire song on a huge screen with all the students watching, and in the end, they had a slate
called मेरी photo लगा के we are proud of you Oh, Shreyas Puranik. So I think and I didn't expect it at all because it was too एक दिन पहले गाना रिलीज हुआ था बट वो स्कूल ने इतना प्यार से शेयर किया. आई गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम मिस्टर भंसाली. ही सेड कि जैसे आजकल के गाने हैं ना वैसा ही गाना है बट अच्छा है. सो आई थिंक फ्रॉम हिम इतना जेन्युइन वो भी सही है बिकॉज आजकल के गाने इन द सेंस आई थिंक ही मेंट इट इन अ गुड वे ओनली yeah, कि yeah. जो आजकल चल रहा है यू हैव मेड समथिंग Hmm. दैट ओनली. Hmm. That's the response I got it from them. What next now? Next, there are two films directed by Siddharth and Garima, who are my writers also. So Okay, they are okay. You're a team anyway, no? yes, yes, yes. So They're one directing now. film, yeah, yeah, yeah. So the Mm. films are ready. Both the films are ready. Mm. One is called Dukan. It's Mm. about surrogacy Okay. and which is now banned, but used to happen in Gujarat a lot. Yeah. And there's another little action wali film called Sale Ashik. So it's Mm. for Sony Pictures, starring Tahir Raj Bhasin and Mm. Mithila Palkar. And a lot of singles are coming. Non-film music has suddenly So your independent music is also around, which yeah, I've yeah, subscribed to your channel. I've seen some. Yeah. yeah. I'm releasing it on my own channel also. I'm doing for other labels also. So Okay. right now I'm enjoying Satranga until Mm. I think Animal जब तक release ना हो तब तक I want to like kind of be on a break because बड़ी Mm. मेहनत से गाना तो and आपको then गाना, I just what about you yourself singing as well as composing? What is that you like now, or you like both? no actually I had sung the scratch of Satranga because mostly Ah. I only sing all the Hmm. first drafts of my Yeah. song. And I think when Arijit sir also sang the song, and lot of friends and all close friends who were listening to my song is like यार अरिजीत ने तो my mom told me कि श्रेयस मराठी में उन्होंने बोला कि त्यांनी खूप चांगलं गायला आहे हा. तू माझा मुलगा आहे like you're my son but I think Arijit has nailed it. But I think I'll request the label to release my version also because a lot of people, a lot of close friends, they want कि Arijit का है but you also should have a version of that song. Hmm. And I want to sing. I definitely want to sing, but a lot of people come in the industry aiming कि भैया मैं ही गाऊंगा और मैं ही compose करूंगा. हाँ. But you have to be flexible if you can, and I Hmm. can be Hmm. because मैं जब बनना है मुझे कोई नहीं रोक सकता. मुझे Hmm. सिर्फ एक बार डिसाइड कर लेना है कि मैंने ही गाना है. बट इट्स ओके टू हैव लाइक जो जो प्लेबैक सिंगर है वो काम ही करते हैं प्लेबैक का. Hmm. Hmm. तो It's perfectioning that they know. जनरल आंसर Hmm. Yeah. But मुझे it is your कंपोजिंग song. आता. हाँ तो बस आई कैन ट्राई टू. मैं सब कुछ करने लग जाऊंगा तो शायद गड़बड़ ना हो जाए. अरिजीत है मतलब उनको गवा के गाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया. जी. मैं गाता तो लोग अच्छा ही बोलते हैं बट अरिजीत ही हैज अ नैक ऑफ लोगों का दिल चीर के अंदर घुस के बताने की हाँ ये गाना है मेरा सतरंगा. सो Lovely. मैं I definitely want to sing but I want to take my own time and probably do it next year. What about concerts? Are you part of concerts, traveling concerts and all as well? I was doing some shows and all but वो I want to Have design you my come to own set. Dubai? Have you I come to have Dubai? like once I have performed in Dubai. I don't I Okay. think but it was at Russell Khema. Okay. Mm-hmm. Yeah, Hmm. it's Carlton Russell Khema. I That's think it was Carlton. that. Yeah, yeah, yeah. So Okay. I've been to Dubai a couple of times because मेरी wife की best friend वहीं रहती है, so we tend to come there every year. Okay. And I want to do my own concert, own like songs का concert. I want to design it my way. I want to Hmm. like have retro songs in that. But I think I'm just not yet there to design all of it. I'm still Hmm. मेरे दिमाग में planning. But I think once I have a couple of more songs, I can perform my own songs also, and then I can do a concert. Okay. One song we can complete the interview with, an all-time favorite of yours, that it could be from any genre, any age. It could be an old song, any one song that you can. जब मतलब आई डोंट नो दिस सॉन्ग जस्ट कनेक्ट्स मतलब मुझे बहुत सिंपल लगता है एंड आई थिंक इसके ऊपर गाना कोई इससे बेहतर गाना नहीं लिखा हुआ है. आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू सिंग इट और नॉट. एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी
कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है. I think this song ends Beautiful. it Beautiful. everything for me. Yeah, Yeah. it is. It is indeed a beautiful song. और तेरी मेरी कहानी है. Lovely. Thank you very much for speaking to me, and I hope to see you in Dubai sometime soon. Definitely, Manjuji. It Yeah, was really nice yeah. to Thank talk you. to you. Ji. Yes. And good luck. Bye. Yeah, Thank you. Thank you. yeah. Listen to Satranga and you know how you I like will. it. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.